A very good morning to all of you, ladies and gentlemen, to this CII's Indian MSME Growth Summit. I would like to take this opportunity to welcome and express my gratitude to the Honorable Minister Shri Bhanu Pratap Singh Verma for joining us today. We have in him a strong supporter of industry and of MSME, and this is in particular for MSMEs as well. Since the emergence of the pandemic, this sector has been widely impacted, but the government has constantly come out with several measures and landmark policies which have helped this sector to stay afloat. CII was constantly working with the Ministry of MSMEs during this period to improve the overall ecosystem. Through our 66 offices across India, we have worked with the central as well as the state governments to improve the supply chain constraints, especially focusing on MSMEs sector during this period. I take this opportunity to thank the Honorable Minister and the Ministry of MSMEs for the positive response to many of our suggestions made during this time. I also welcome and thank Mr. D.D. Swain, Secretary MSMEs for spearheading the development of MSME sector and guiding this convention. We have diligently followed his advice to sensitize industry members across the nation on the policy and schemes directed towards MSMEs in the regional dialects so that the full advantage of the government's programs may be understood and accrue to them. I welcome Mr. Chandrajit Banerjee, Director General CII, CV. Today on 27th June, we along with the world are celebrating the 5th anniversary of the International MSME Day. It serves to honor the contribution of MSMEs who make to global growth. CII recognizes this, and in the spirit, we have organized this summit today. The summit is not only a celebration of the immense contribution of our MSMEs, who have continued to make to India's economic growth. And they are very, very important. The 63.5 million industries that we have contribute handsomely to the GDP as well as the export and also the people that they employ. We have today an opportunity to bring together the industry,
government, academia, and thought leadership from across the globe to exchange ideas and build synergies for the future growth of our MSMEs. As a chairman of the National MSME Council in CII, I can confidently say that CII has been committed to making our MSMEs stronger, resilient, competitive, and sustainable. I'm grateful to present the government and the Ministry of MSMEs, which has prioritized continued engagement with the industry. I would like to share that this engagement has allowed several of our council recommendations to be considered by the government. The recommendations on the extension of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme, otherwise known as ECLGS, announced in this year's budget by the Honorable Finance Minister, is one such example. CII also compliments the government for its commitment towards formalizing this MSME sector through interlinking of the Udyam, eShram, NCS, and ASEEM portals. We at CII are offering full support to the government in maximizing outreach and encouragement for more and more MSMEs registration to this portal. With a constantly changing geopolitical and economic scenario, MSMEs continue to face newer challenges. These new challenges also bring with them new opportunities to reassess the current systems and build on them for faster future growth. Thus, it becomes essential that we try to bring together the various stakeholders to find new and innovative solutions to those roadblocks and in turn build long-term resilience and sustainability of our MSMEs. This sets the stage for the themes of this summit: maximizing MSME outreach and business development and sustainability, with a focus on digital commerce, finance, and technology for achieving this. The two-day summit will focus on digital commerce on day one and finance on day two, with technology being the underlying theme across both days. The post-COVID era has hastened the pace of digital transformation. What didn't or couldn't happen in 5 years literally happened in 5 months. And I think it's imperative that all MSMEs now imbibe new technologies and digital ways of working. This will be very important if all our MSMEs, we think, those who are ready to really plug into the global supply chain. And this is the future and what we think is our dream, that we should do that. Digital commerce is allowing our micro enterprises to have a larger reach, fairer prices, solidify supply chains, and become more competitive and sustainable. It can be crucial to inclusive growth in line with Sabka Saath, Sabka Vikas. This critical component of the e-commerce and inclusive growth will be discussed and debated during this summit. Our sessions finally aim to understand the role and the kind of technologies that can help small businesses from time of production till the ultimate consumption, and finally lead to a sustainable business practices. Finance, as always, is another area where support to MSMEs is critical and thus invariably features as an important theme for this summit as well. We realize that there is an increasing need to leverage the penetration strength of the conventional financial institutions and the robust delivery mechanisms to fintechs with the goal of financial inclusion in mind.
But with the changing business environment and the transformations happening across the globe, it is equally essential to build non-conventional sources of finance for our MSMEs through design of innovative financial products that are robust, easy, effective, and low cost. In line with this, on day 2 has sessions on the potential of how small businesses can leverage on the potential on growing private equity and venture capital in space in India. This is also another area where we are looking at, because MSMEs, if they want to take advantage and grow from step 1 to step 2 and step 3, it is important to go into the capital market as well. This will be coupled with an interesting fireside chat on achieving the ideal mix of debt and equity financing. With this background, I would now request Sibi, Director General of CII, to make his address for the summit. Sibi, can I ask you to please? Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji, the Honorable Minister of State, Ministry of Finance, Ministry of MSME, Shri B.B. Swain, the Secretary MSME, Shri Kan Somani ji, very distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. पहले तो मैं इतना बोलना चाहता हूं कि मैं बहुत ही आभारी हूं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी के यहाँ पधराने के लिए। आप आए ही यहाँ पे सर, आज यहाँ पे मौजूद ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, सारे इंडिया के सारे जगह से एमएसएमई आए हुए हैं और आपका आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे में यहाँ आना एक बहुत ही बड़ा सिग्नल है और आपका पार्टिसिपेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू अस. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस. I'd also like to welcome very, very specially someone whom I have known for more than 2 decades, Shri B.B. Swain ji. We have worked on very, very different areas and many critical areas, if I can say. And I've always seen to be in him somebody who is so energetic, somebody who's always listening to the industry and giving back so much of important policy initiatives, if I may say. Thank you very much, Sri Swain, for being with us here today. Shri Verma ji sir, आप यहाँ पर आज आए हैं स्वयं साहब का साथ. मैं कुछ बात करना चाहता हूँ अबाउट जो CII काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में MSME का साथ. ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपका सामने ताकि आपका कुछ एडवाइस, कुछ गाइडेंस, कुछ इनपुट्स हमको मिल जाए कि आगे जाते हुए हम कैसे काम कर सके, क्या क्या चेंजेस हम ला सके और आपका मंत्रालय के साथ, आपका साथ हम कैसे इंडिया को, इंडियन MSME को ग्लोबली स्ट्रांगली कनेक्ट कर सके. आज ये मैं बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज इंटरनेशनल MSME डे है और आज जो हमारे अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल सप्लाई चेन का साथ एक लिंक होने का, बिकॉज आज सारे विश्व देख रहे हैं कि कहाँ से वो सप्लाई ले सके, कहाँ से उनका सोर्सेज ऑफ सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर सके और इंडियन MSME कॉम्पिटिटिव जैसे बन रहा है वैसे हम देखते हैं एक बहुत ही स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी हमारे ग्लोबल सप्लाई के चेन के साथ इंटीग्रेट होने का एक अपॉर्चुनिटी है और हम चाहेंगे आपका लीडरशिप में हम काम करें कि ताकि ये हम आगे लेके जा सकते हैं. सर, ग्लोबली जो हम देख रहे हैं एक टेक्नोलॉजी के ऊपर जो विशेष करके ध्यान हम दे रहे हैं और इंडिया में भी हम देख रहे हैं उसका उत्साह जो मिल रहे हैं हमारे गवर्नमेंट से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, एक्सेस टू फाइनेंस के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये सभी एक बहुत
बहुत महत्वपूर्ण मैं कह सकता हूं इश्यूज है हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। और आप यहाँ पर है तो हम इसको कैसे हम लेवरेज कर सके ताकि एमएसएमई को हम उत्साह दे सके कि पार्टिसिपेट करे ये ग्लोबली लिंक होने के लिए। सर, हम एक एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको हम कहते हैं हमने चालू किए हैं, चंडीगढ़ में बेस्ड है, जो काम कर रहे हैं एमएसएमई के बारे में। वो क्लस्टर अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं ताकि फैक्ट्रीज में जाके एमएसएमई का कंपेटिटिवनेस बढ़ा पाए। विभिन्न क्षेत्रों में वो देख रहे हैं जैसे कि एनर्जी, क्वालिटी, एक्सपोर्ट्स वगैरह, लेकिन इसको हम स्केल अप करना चाहते हैं आपका आशीर्वाद से। आज तक तो हम हजारे एमएसएमई का टच पॉइंट्स बनाए हैं, समथिंग अराउंड 5200 स्मॉल एंटरप्राइजेस को उनको प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस करे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे कुछ पार्टनर्स यहाँ पे मौजूद है, वेरी क्रिटिकल पार्टनर्स जो आपका गवर्नमेंट का साथ, आपका मिनिस्ट्री का साथ काम कर रहे हैं, अभी हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, तो वो हमको स्केल अप करने में मदद करेंगे। आपका सेक्रेटरी का अगर इस दिशा में हमारे ऊपर कोई गाइडेंस रहे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सर, इंडिया में 32 कंपनीज है जो आउट ऑफ द 80 डेमिंग विनर्स ऑन क्वालिटी जो हमारे यहाँ से है, और इसके लिए 1200 से ज्यादा प्लांट्स को हम असिस्ट कर सके हैं टू बिकम एमएसएमई लीडर्स। ये भी नंबर्स कम है सर, इंडिया को देखा जाए तो इसको भी हम स्केल अप करना चाहते हैं। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप मानेंगे अगर अगेन आज एमएसएमई इंटरनेशनल डे है, ये हाउ टू कनेक्ट आवर एमएसएमईज इंटरनेशनली एंड ग्लोबली। सर, जो सीपा साइन हुए हैं यूएई के साथ, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देते हैं हमारे कुछ क्षेत्र में, कुछ सेक्टर्स में, जहां से एमएसएमई का कनेक्ट यूएई का साथ जो बड़ा मार्केट है हमारे लिए, वहां पे हम एक्सेस कर पाए और वहां से और भी कहीं मार्केट्स में हम एक्सेस कर पाए। हम वी विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन, 100 से भी ज्यादा एमएसएमई को लेके हम जाएंगे यूएई में, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। और ऐसे और भी कुछ कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि एमएसएमई डेलीगेशंस ये साल हम फोकस करेंगे। हम अभी सर वापस आए, कुछ लास्ट 3 हफ्ता में कुछ एरियाज में हम गए हैं, कुछ कंट्रीज में जहां पे पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग था, सेनेगल, गैबन, कतार वगैरह, और भी जा रहे हैं हम ईरान, और जाते हुए दिसंबर का पहले ही हम यूरोप कवर करेंगे, फ्रांस कवर करेंगे, और यूके और यूएस भी लास्ट में कवर करेंगे। सो एमएसएमई को कैसे इंटरनेशनली कनेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक एमएसएमई डेलीगेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड हम ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ हो गए हैं जैसे मैंने आपको बताएं। सर, और एक चीज हम करने का कोशिश कर रहे हैं जो अगर अगेन आपका सेक्रेटरी का गाइडेंस से इसको हम बढ़ा सकते हैं, एक रिवर्स बायर सेलर मीट जो हम कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ बायर्स के साथ, और वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इन अक्टूबर एंड नवंबर ऑफ दिस ईयर। सो रिवर्स बायर सेलर मीट जो हम ऑर्गेनाइज करने को जा रहे हैं विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Sir, CII, we are already in discussions with the EU Commission funded MSME Business Exchange. So this will also give global access to Indian MSMEs for business, technology or capital. Sir, एक विषय पर हमारा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है जिसमें इंडिया का आज एक ग्लोबल सक्सेस माना जाता है स्टार्टअप्स में। उसमें अगर हम थोड़ा सा इनिशिएटिव्स जो हमने किए हैं, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स एक्चुअली सर, हमारे जो लार्ज मेंबर्स है, सीआईआई माना जाते हैं उनको लार्ज मेंबर्स के लिए, सो उनके साथ हम कनेक्ट किए हैं एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोग्राम का दरमियान, जैसे जहां पे
about 10,000 participants भी आए हैं और connected हुए हैं for mentorship and even for supply chain, and ये इससे एक बहुत ही strong beneficiary MSME sector रहे हैं और again इसको आगे जाते हुए हम scale up करेंगे. Sir, Honorable Prime Minister ने हमको आजादी का अमृत महोत्सव के लिए बहुत सारे डायमेंशंस दिखाए हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं. एक इम्पोर्टेंट एरिया में हम काम करना चाहते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, उनको आपको गाइडेंस चाहिए, एंड वी वांट टू वर्क विथ योर मिनिस्ट्री वेरी क्लोजली इज ऑन हाउ डू वी विजन इंडिया एट 100 for MSMEs. उसका एक्सरसाइज हम चालू किए हैं. So next 25 years for MSME and how can we work on it is something that we would like to work with you. Sir, और टेक्नोलॉजी का बात मैंने किए हैं जब और we are very strongly trying to encourage our MSMEs product enterprise systems जो through कुछ awards हम institute किए हैं. गवर्नमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है. 2 साल से नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारे कोविड चल रहे थे, बट वी वुड लाइक टू वी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर आल्सो लाइक टू पार्टिसिपेट, एंड हमने एक इनोवेशन अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किए हैं. लार्ज कंपनीज को भी मिलते हैं, एमएसएमई को मिलते हैं, उसको हम आगे लेके जाएंगे. आईपी अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उसको भी हम कर रहे हैं. और डिजाइन और these areas we feel are very critical areas और इसको भी हम आगे लेके जाएंगे with MSME. ये सब awards already हैं. So facilitating MSMEs in protecting their designs, or new technologies is something that we are working through what we call CII IP platform, IP facilitation platform, which is again working pan India. और इसको भी हम स्केल अप करेंगे. सर लास्ट में मैं 3 रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी का बारे में सर, एंड जहां पे अगेन वी वुड रिक्वायर योर सेक्रेटरीज गाइडेंस इज focused skill enhancement program for MSMEs on new product development and innovation system. इसको आगे हम कैसे लेके जा रहे हैं. Sir, I spoke about design and I find design to be a very critical, important area. So design job fair for MSME at institutions and research labs of our national importance like NIDs. वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं. Young talent, how do we get them, उनको हम कैसे, how do we get them to become aware of the several opportunities that are there. And thirdly, sir, if we can have an annual technology forum between the ministry and the CII. So there are so many more areas that we would that come to our mind, but we would like to this not to be a one-off engagement. हम बार-बार आना चाहते हैं आपके पास, और हमारे जो MSMEs यहाँ पे gathered है, ये तो एक representative community है. We have, हमको 64 ऑफिस अभी इंडिया में है, हम उसको भी बढ़ाना चाहते हैं MSME के लिए, और उसका भी अगर कुछ सजेशंस आइडियाज आए तो हम जरूर एक कुछ टाइम फ्रेम का अंदर ज्यादा ऑफिसेस खोलेंगे फॉर क्लस्टर्स अक्रॉस द कंट्री टू टेक दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर इंडस्ट्री अहेड. With that, once again, ladies and gentlemen, thank you for participating. और माननीय मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद. Secretary साहब, thank you very much for being with us. Thank you. Thank you very much, CB. Indeed, you brought out 2 or 3 points on technology which are very important, and we would like to get our Honorable Minister's view on this. A lot of work is being done in the MSME ministry, and Mr. B.B. Swain is abreast with all that and driving everything. So may I ask you to please speak to us. Honorable Minister of State, MSME, Bhanu Pratap Singh Barma ji, Sri Srikant Somani, my very, very old friend. Not that Mr. Somani is also not an old friend, but he is still older, has been a friend since, as he very rightly said, decades now. All the dignitaries present, many of whom I have had the personal pleasure of knowing over the years. Ladies and gentlemen, I'll start with what
Mr. Banerjee said, the next 25 years, I think that's a very interesting concept which Mr. Banerjee has raised. Would be very happy to work with you. What we essentially see a dream of a very formalized economy, a very formalized MSME sector, a sector where credit is highly accessible, technology, I mean, just like equality of opportunity, there is an opportunity of gaining technology for every MSME. But it's definitely would be a real pleasure to work with CII and all like-minded organizations to really kind of set up what is going to be the next 25 years. Very beautiful concepts have been raised, new product development, design job fair. You talked about an annual technology forum. These are very interesting concepts, which I'm quite sure will carry it home, put it up for deliberation to the honorable ministers, and let us see how we go about it. I mean, I will not say that our contribution is total in any way, but quite obviously we do work on technology, do we work on product development. Annual technology forum is, I think, it's a very interesting concept which you have raised. Can we really do it? I'm quite sure we'll work towards that. I thank CII for organizing this event. It's indeed a pleasure to participate in today's event on the occasion of International MSME Day. For the Ministry of MSME, it's a day of celebration, which also helps us recommit ourselves to the goal of strengthening millions of MSMEs in this country. We could, at this point of time, remember a few milestones. June 2006, Micro, Small and Medium Enterprise Development Act was passed. This month marks 16 years of the Act. For last 5 years, we have been celebrating the International MSME Day. And on 26 June 2020, the Ministry of MSME adopted a common definition for MSMEs in both manufacturing and services sector. The definition, as we all well know, is based on investment in plant and machinery, equipment, and turnover. It is 2 years since then. Needless to say, the journey for MSMEs and for the ministry has been challenging. The pandemic has obviously been the biggest of the recent challenges. A coordinated effort of all stakeholders has made it possible to overcome the crisis. Today, we are on the recovery path, better positioned than the previous year, with a projected growth rate higher than that for the global economy. Undoubtedly, to deal with the issues facing MSMEs, a multi-pronged approach is the most suitable. The first obvious step is to identify the micro, small, and medium entrepreneurs and to bring them under a formal structure. An endeavor was made in 2020 to launch the Udyam portal, where MSMEs can register free of cost on a self-declaration basis and without having to submit or upload any documentation. Udyam portal is definitely a milestone on the ease of doing business front. The API linkage with CBDT and GSTN ensures that the data is fetched from this database once the MSME puts the PAN number on the Udyam portal. In less than 2 years, ladies and gentlemen, I'm happy to report the 9.2 million MSMEs have already registered under the Udyam portal. This includes wholesale and retail traders who are included in 21 for priority sector lending, and street vendors, which were also included in 2021. Soon we'll be crossing the 10 million mark. The Udyam database is all set to become richer. This is what Mr. Somani also mentioned in his address. To reach on the integration of the portal with that of NCS, eSRAM and ASIM portal, once it is completed. Another landmark in the direction of formalizing of MSMEs on the horizon, wherein we are working towards bringing into formal framework the tiniest of the micro enterprises. Access to affordable credit remains a challenge for all, especially MSMEs. In that context, I think the way you have set this particular summit, focusing on finance on one particular day and technology on the other day, is absolutely the very correctly identified challenges before MSME. The affordable credit, the challenge is also reflected by the high proportion of queries and grievances received on the Champions portal. This portal was launched amid the first wave of the pandemic with the specific objective of providing handholding to MSMEs.
Today, I am glad to inform you that 99.3% of close to 500,000 grievances received on this portal have been attended to. Coming back to the point I was making about access to credit, the requirement can be multiple forms: margin money, operational needs, bulk investment, collateral requirements, delays in receiving payments, debt financing, equity financing. We are working towards facilitating greater ease of access to credit. To adequately access this aspect, the programs like PMEGP, credit guarantee schemes, Self-Reliant India Fund, there is also the ECLGS, wherein 1.19 crore guarantees have been issued, of which 1.13 lakh crore have been to MSME borrowers. The total amount of loan guaranteed under ECLGS is 3.47 lakh crore. Out of this, the amount earmarked to MSMEs is 2.31 lakh crore. The performance of the credit guarantee scheme during 21-22 has achieved a milestone with guarantee coverage of 56,000 crore. This is the first time actually in CGTMS we have crossed 50,000 crore this year. This is quite a milestone, the highest ever in any year since its inception. The Self-Reliant India Fund has been operationalized. You'll be happy to know that 22 daughter funds have already been empaneled, and we have already placed equity participation. These daughter funds are with, I think, about 75 who have been selected from many fields, ranging from agriculture to defense to health to education. And I'm absolutely hopeful that in future, SRI fund will play a huge role in equity participation in upcoming MSMEs. Access to the state-of-the-art technology is at another area where a lot can be done. Our recent initiatives like JED, Innovative, Hackathon have been definite concrete concepts, steps towards providing technology upgradation to MSMEs. Here I do need to mention about the exemplary work being done by our testing centers and technology centers and tool rooms for the purpose of technological support to industries through design and manufacture of tools. This is what Mr. Banerjee mentioned. There is a substantial amount of work which is actually taking place in product development, and a lot more need to be done. Quite obviously, this is not a complete kind of a list, and this is a sector where we need to really work together. 15 new technology centers are being established, of which the ones in Bhiwandi, Bhopal, Rohtak, Puducherry, and Visakhapatnam have already been inaugurated. Our public procurement policy for MSCs orders mandates 25% of annual procurement of ministries, department, and CPSCs from MSCs, that is micro and small, within which 4% is earmarked for SC/ST and 3% for women. While the actual achievement of procurement in 2020 and 22 was 35%, which is actually above the mandate itself. The procurement from SC/ST and women have not reached the desired level. In this context, our National SC/ST Hub scheme is an important initiative. The encouraging fact is that the number of MSCs owned by SC/ST and women have been increasing every year. The Ministry of MSME regularly monitors the progress of procurement through the Sambandh portal and has been working closely with the Department of Public Enterprises. Another announcement which has helped in public procurement from MSCs is disallowing of global tenders up to 200 crore. The role of the central government is to provide an enabling environment for the development and promotion of MSMEs. The endeavor of the government will be more effective when all stakeholders work together in perfect coordination. This should be easy to achieve since the objective of all stakeholders for the welfare of the MSME remains the same. In this context, rolling out of RAMP, which is working towards strengthening institutional capabilities and bolstering the coordinated efforts of the center and the state, is very important. I'm confident that the potential of MSMEs will be utilized to the full as we strive for an Atmanirbhar Bharat and a $5 trillion economy. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Thank you, Susan. Indeed, a lot of work that is being done for MSMEs, laudable indeed. Honorable Minister Sir, through these several months, हमने शिपरॉक के साथ काम किया है ये देखने के लिए कि डिजिटल इम्पैक्ट किस तरह से D2D बिजनेस में MSMEs आ सकते हैं और इसके हमने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है. May I ask that report to be released, please? Can I invite Mr. Sahil Goel, please, Chairman?
begin? Struggling with the traditional ways to run your business enterprise? Thinking how others are selling across boundaries and wondering how? Join the digital bandwagon with Digital Saksham, an initiative of CII in partnership with Mastercard Center of Inclusive Growth, and integrate into the digital economy. Access credit, expand market reach, diversify your customer base, digitalize your financial operations, and strengthen your supply chain. As part of the Digital Saksham project, customized trainings in vernacular languages by over 40 trainers are ongoing in 8 Indian states, strengthening MSMEs on the benefits of digitization. So what are you waiting for? Log on to www.ciidigitalsaksham.com and register for free. Digital baniye, aage badhiye. Thank you. So this is a very important program of Digital Saksham that we've done. The project is being undertaken by CII in partnership with Mastercard for inclusive growth. The main aim is to promote digitalization amongst micro enterprises in India and create awareness, train, and ensure adoption of select digital services among micro enterprises. The project has an outreach target of 3 lakh micro and small businesses. We will train 75,000 micro enterprises at cluster districts and district level on the usage of various affordable digital tools, and eventually ensure that 50,000 businesses adopt these digital tools over a period of 3 years. All the content and the training have been customized in various vernacular languages for creating wider impact and acceptance. The project has been rolled out in 8 states, outreached 3,000 plus enterprises, training conducted for over 2,300 enterprises, and over 1,500 plus micro enterprises have adopted digital tools. CII has appointed over 40 trainers and coordinators in 8 states and 25 districts so far to execute the project at the cluster and district level. We would like to play a short video which you have already seen. I think that we can. This video also is in vernacular language, so for people to see. So with this, we would like to hear you and invite you to please give your address and your views on medium and what we should do. CII इंडियन MSME ग्रोथ समिट के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे MSME मंत्रालय के सेक्रेटरी श्रीमान बीवी स्वयं जी, CII के महानिदेशक श्रीमान चंद्रजीत बनर्जी जी, अध्यक्ष CII राष्ट्रीय MSME परिषद के अध्यक्ष श्रीकांत सोमानी जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट अतिथि, मीडिया जगत से आए हुए सभी
हमारे बंधु, भाइयों एवं बहनों, विशेष रूप से आज एमएसएमई डे है। मैं यहां आए हुए सभी लोगों को आज इस एमएसएमई के डे के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से एमएसएमई दिवस मनाने का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था, समुदाय और समाज में एमएसएमई के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जिन नीतियों की आवश्यकता है उन पर समाज को बढ़ावा देना। आज मैं चाहता हूं कि हर कोई उन लाखों छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान पर विचार करे जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से हमारे खाने से लेकर कार चलाने तक हमारे जीवन में एक प्रत्येक हर उत्पाद में एमएसएमई का कोई ना कोई योगदान रहा है। छोटे व्यवसायों का हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमारा मंत्रालय स्कीम और इनिशिएटिव के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन बढ़ाने और एमएसएमई की क्षमता को उजागर करने का प्रयास कर रहा है। एमएसएमई को डिजिटल टूल्स और नई तकनीक को अपनाकर अपने कारोबार को ज्यादा तेजी से पुनः स्थापित करना चाहिए। एमएसएमई मंत्रालय चैंपियन योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति और बाजार विकास योजना जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। ये योजनाएं एमएसएमई के विकास में सहायक हैं, इनके बीच प्रतिस्पर्धा और निर्यात को बढ़ावा देती हैं। मंत्रालय ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएसएमई को प्रशिक्षण सहायता के साथ साथ तकनीकी सहायता के लिए कई प्रौद्योगिकी केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। महामारी के दिनों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज से एमएसएमई को निपटने में काफी मदद मिली है। मैं जानता हूं कि कोरोना काल जिस समय प्रारंभ हुआ था, होने के बाद हमारे देश में न मास्क थे, न सैनिटाइजर था, उतनी मात्रा में हम लोग को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हमारी जो एमएसएमई की छोटी छोटी यूनिटें हैं, उन्होंने कोरोना काल में ये सारी चीजों का उत्पादन करके एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। विशेष रूप से हम जानते हैं कि कोरोना काल में जिस समय कुछ एमएसएमई की ऐसी यूनिटें थी जो काम कर रही थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ यूनिटें सिक हो गई थी, कुछ इस तरीके से थी कि अपने कामगारों को पेमेंट नहीं दे पा रही थी और अन्य कारणों की वजह से वो बंद होने की कगार पे थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले से इसकी चिंता की थी और उन्होंने जिस योजना का उल्लेख यहां भी किया गया है, ECLGS योजना के अंतर्गत पहले 3 लाख करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत दिए गए थे। इसके बाद दूसरे चरण में 1.5 लाख करोड़ रुपए
और इस योजना को दिए गए। और अभी 2022 और 23 का बजट जब प्रारंभ हुआ था, जिस समय पेश हुआ है, उसमें 50,000 करोड़ रुपए और इस योजना के अंतर्गत दिए गए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसी तरीके से एमएसएमई की जो हमारी यूनिटें हैं, जो यूनिटों को चला रहे हैं व्यवसायी, वो किसी तरीके से परेशान न रहें, और उन्हें 5 लाख करोड़ का एक विशेष पैकेज दिया है। उस 5 लाख करोड़ के पैकेज के माध्यम से ढेर सारी यूनिटों को सहायता मिली है, और अभी तक करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो हमारी यूनिटें हैं उनको सहायता भी की जा चुकी है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारा जो भारत के 6.3 करोड़ एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और हमें उनको मजबूत बनाते हुए एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है। इस अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर मैं सभी एमएसएमई संचालकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और उन्हें चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हमारा देश का जो जीडीपी है वो 30% से अधिक योगदान, और भारत के कुल निर्यात के 49% से अधिक योगदान के साथ है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन और मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमएसएमई पर फोकस बढ़ाया जाए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में हम भूमिका निभा सकें, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना 2024 का है उसे साकार कर सकें। मैं एमएसएमई संचालकों से आग्रह करूंगा कि वे औद्योगिकी पर गंभीरता से विचार करें। कोई भी देश एमएसएमई के बिना आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाया है। आज यह केवल प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को बेहतर और डिजिटल सर्विस के मॉडल का विकास छोटे व्यवसायों की तरक्की से मदद करता है। छोटे कारोबारियों को अपने मैनेजमेंट स्किल, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने और अपने टेक्नोलॉजी बेस को स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है। हाल ही के वर्षों में ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन बाजार का विकास हुआ है। इसका एमएसएमई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ई कॉमर्स से एमएसएमई ज्यादा लाभ हासिल कर पाएंगे। इससे रेवेन्यू और मार्जिन बढ़ेगा, नए बाजारों तक पहुंच होगी, मार्केटिंग खर्च में बचत होगी, और कस्टमर को बेहतर अनुभव मिलेगा। हमारा मंत्रालय भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए और नए उद्यमियों को मदद देने के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने फाइनेंस व सूचना के क्षेत्र में सुधार तथा इंटरनेशनल मार्केट में एमएसएमई की पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। छोटे फर्मों और उद्यमों के लिए बेहतर कानूनी, वित्तीय और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना हमारी प्राथमिकता रही है। कोविड-19 महामारी दुनिया भर में सप्लाई चेन में बाधा पहुंचाने के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत का निर्यात रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 2023 तक शिपमेंट बढ़कर $1 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने एमएसएमई द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, मुद्रा लोन की उपलब्धता तथा स्टैंड अप इंडिया शामिल है। इसके अलावा मंत्रालय ने एमएसई को अपने उत्पादनों और सेवाओं को विदेशी बाजार में निर्यात के लिए देश भर में 52 निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं और 102 उद्यम विकास केंद्र स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य एमएसएमई को नियमित तौर पर ग्रामीण उद्योग पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ पेशेवर सलाह और समर्थन सेवाएं प्रदान करना और उद्यमी नेताओं को नेटवर्क बनाना। एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय संस्थाओं से आसानी से लोन मिल सके, विकास और आधुनिकीकरण के लिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिले, एक्सपोर्ट मार्केट में उसकी पहुंच हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो,
तथा ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की सुविधाएं बढ़ें। भारत में एमएसएमई समय के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हमारा फोकस उद्यमिता, स्टार्टअप, नए तौर तरीके अपनाने, अहम आर्थिक फैसले और रणनीति पर है। महामारी की गंभीरता लहर के बाद एमएसएमई सेक्टर विकास और दोबारा मजबूती से खड़ा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र में विकास हो रहा है और इसे पूरे देश में देखा जा सकता है। इसके पीछे सबसे अहम कारण हमारी सार्वजनिक नीति में आने वाली प्रगतिशील बदलाव हैं। मैं कामना करता हूं कि देश का एमएसएमई सेक्टर अपने सभी कार्य क्षेत्र में शानदार सफलता प्राप्त करे और आशा करता हूं कि हम सब नए तरीके अपनाएं और टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी गति बढ़ाएंगे। यही समय है जब हमें एक राष्ट्र के रूप में अपनी ताकत दुनिया को दिखानी है और देश का एमएसएमई सेक्टर इस समय ऐसा करने के लिए तैयार है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय जिसे हम लोग कहते हैं, और विशेष रूप से यदि मैं ये भी कहूं कि मेहनत से मुमकिन एंटरप्राइजेस, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। एमएसएमई के इस अंतर्राष्ट्रीय डे पर मैं पुनः आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। As we come to the end of the day, the first plenary session, let me thank Mr. Swain for addressing the summit. My sincere compliments to you, sir, and the Ministry of MSME for the commitment and dedication of the MSME sector, which is well demonstrated in the series of path-making initiatives which have been undertaken by your good ministry and under your watch. श्री भानु प्रताप वर्मा जी, thank you very much. आप आए, बहुत अच्छा लगा, और we've heard your thoughts and it's a pleasure to hear you. With your vision, MSME sector is set to have an accelerated growth. The recently issued draft policy for the MSMEs is a laudable step which has been taken at the most appropriate time when MSMEs have regained momentum post the hardship faced during the unprecedented COVID scenario. The MSMEs are rebuilding it, and it is time that they are supported with the requisite measures through enabling policies, reforms to help them reach their goals, considering their vast potential and opportunity for growth. India is the fastest growing economy with a large consumption base, stable political environment, and a government focused on economic reforms and progressive outlook. I'm sure we are destined to write a new chapter for the MSME sector. I'm certain that through the discussions and exchange of ideas of this summit, many new innovative and solutions for our MSMEs will come forward, which will help them tackle any challenges they face or are likely to face in the future. Ladies and gentlemen, please take advantage of the 2 days of this deliberations, and thank you for being with us. Thank you.